Now moving towards the chemical properties of the carbon. After discussing the physical properties, now we are discussing chemical properties. Now what are chemical properties? Chemical properties basically देखिए वो properties होती हैं जिसमें हम किसी भी element को chemically judge करते हैं that how does it chemically react with the other elements to produce the new compounds. ठीक है. अच्छा, as far as concerning carbon, so it is not very reactive element and the reason we have discussed that कि इतना ज़्यादा reactive क्यों नहीं है, क्योंकि ये जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो एक न्यूट्रल स्टेट होती है. इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट नीड्स मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो कंडीशन ऐसी है कि it have to need 4 more electrons which is quite difficult for it कि 4 इलेक्ट्रॉन आप गेन करो या तो आप 4 इलेक्ट्रॉन दो. तो ऐसी सिचुएशन जब एटम्स के लिए इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे बिकम बिट अनरिएक्टिव. सो अगर ऐसी कंडीशन होती, फॉर सपोज कार्बन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो इट बिकम रिएक्टिव. यानी कि जब ऐसी कंडीशन होती है कि एटम्स को या तो इलेक्ट्रॉन कुछ ही चाहिए होते हैं या उनके लिए पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स लेना, तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं. यानी कि देखिए रिएक्टिविटी से क्या मुराद है कि किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर लेना और फॉरन न्यू कंपाउंड बना लेना. लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास ये टेंडेंसी हो कि आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सको या इलेक्ट्रॉन गेन कर सको. बट कार्बन इज नॉट इन अ सच स्टेट और सच कंडीशन दैट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैज़ अ लो रिएक्टिविटी. इट डज नॉट सडनली और react with any other element to make a new compound. So this is the thing, that's why it is not a very reactive element and it forms covalent compound, the compound that are formed by the mutual sharing of electron. Well, moving towards its chemical properties, first combustion. What is combustion? Combustion is basically the simple process in which any element if combined with the excess of oxygen and it get burns, so such reaction is called combustion. देखें, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, so it will form carbon dioxide which is a gas, and in this reaction a amount of heat is released. The minus 394 kilojoule per mole is the amount of heat which is released. I have discussed कि such kind of a reaction जिनमें कोई भी element कार्बन ऑक्सीजन से excess of oxygen से react करे and it get burnt and it releases the amount of energy, such kind of a reactions are called combustion reaction. As well as exothermic reaction, कोई भी ऐसा reaction जिसमें amount of heat release हो वो रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. वेयर एज ऐसे रिएक्शंस जिनमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रिएक्शन में, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट इन दिस रिएक्शन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एडेड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय द साइन ऑफ दिस. इफ देयर इज अ this is the sign of heat, this is the sign of energy, we denoted by delta H. So how we can judge or analyze that this amount of heat is by exothermic reaction or by endothermic reaction? If there is a sign of negative, so it means it is the exothermic reaction, and if there is a sign of positive here, so it means it is endothermic reaction. And combustion reactions are always the exothermic reaction. There's the reason we know that it is exothermic reaction. Okay. अब देखें, कंबस्शन 2 तरीके की होती है. एक तो कंप्लीट कंबस्शन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है. सच काइंड ऑफ अ कंबस्शन विच अकर इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है एक्सेस में है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्लीट कंबस्शन प्रोसेस. वेयर एज अगर ऑक्सीजन का अमाउंट एक्सेस में नहीं है तो सच काइंड ऑफ अ कंबस्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्शन. कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट कंबस्शन एंड द इनकम्प्लीट कंबस्शन. बस द थिंग इज टू रिमेंबर, इन कंप्लीट कंबस्शन देयर इज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर इज इन इनकम्प्लीट कंबस्शन देयर इज नॉट एन एक्सेस ऑफ oxygen. Now moving towards another chemical property of carbon, which is combination reaction. As the name indicates that in this reaction there will be any combination of any 2 elements. As we are discussing about the properties of carbon, so obviously we will gonna study about the combination reaction of carbon. अच्छा, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन के पास क्या किन किन एलिमेंट से रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, किन किन एलिमेंट से कंबाइन करने की टेंडेंसी है. इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है elements का and they will combine to form a new compound. Carbon will react with the 2 hydrogen in which condition? Under high temperature. If this condition is not available to
कार्बन, सो दे नेवर गonna react with each other to form new compound. कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो and we want them to react to form a new compound, so there must be a condition, catalytic condition, which is high temperature. If we do not provide a high temperature to these two elements, they will never gonna react to form methane. Carbon plus two atoms of hydrogen will combine to form CH4. What is CH4? It is a methane gas. Now another type of combination reaction, this is a direct combination, so we will say it as a combination reaction. When carbon react with two atoms of a sulfur, it will combine to form carbon disulphide. CH2 is the carbon disulphide. Okay. Now when two carbons react with the calcium, they will form CaC2. This is also by the direct combination reaction, so we can regard it as a, or consider it is under the heading of combination reaction. Now the last type of a common combination reaction which occur in carbon is with aluminium. When two atoms of carbon react with the four atoms of aluminium, they will form Al4C3. These are the different compounds which are formed by the direct combination of the carbon with this respective elements. Now moving toward another property, chemical property of the carbon, which is as reducing agent. Before going to understand this property, we have to understand about the term reducing. What does reducing means, or what are the reducing agents? Before understanding about the reducing agent, we must have the concept of oxidation or reduction. Now what is oxidation and what is reduction? Must listen it carefully, क्योंकि ये basic concept है, अक्सर बच्चे इसमें confuse होते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो. अगेन सुन ले, सच काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच द गेन ऑफ ऑक्सीजन अकर बट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन अकर. Oxidation, this is the definition of the oxidation, but the oxidizing agent is the reverse of oxidation. Oxidizing agent वो agents होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं. This is the concept of oxidation and oxidizing agent. Now if we move towards the reduction and reducing agent. Reduction is simply the process in which the gain of electron occur or the gain of hydrogen occur. This is the simply reduction process, which is the quite reverse of oxidation, and the this is the concept of reduction. And what are reducing agents? Reducing agents are the reverse of reduction. In reduction, the gain of electron occur. Reducing agents are those agents which will lose electron. Okay, now move towards this concept. I have said that carbon act as a reducing agent. It means it has a greater affinity for oxygen and it reduces the metal oxides. It reduces the metal oxides. Now what are metal oxides? देखें, metal oxide ये आपके सामने example. इसको metal oxide कहने का मकसद क्या है? Because when metal combine to react with the oxygen, so they will simply form the metal oxide. Here Fe is the metal, and when it combine to react with the oxygen, so it will form the metal oxide. Same as Cu is a metal, and when it will react with the oxygen, it will combine to form a metal oxide. Now what I am saying here, what I am trying to saying here is, here in this reaction carbon act as a reducing agent. And what are reducing agent? Such kind of a agent which has a tendency to reduce anyone and get oxidized. देखिए दोबारा समझें कि एजेंट है रिड्यूस करवाने का, यानी अगले वाले को, अगले एलिमेंट को रिड्यूस करवाएगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. इफ देयर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एजेंट है ऑक्सीडाइज करवाने का, यानी अगले वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा. यानी कि यहाँ पे अगर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है तो ये अगले वाले को क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज कराएगा, यानी कि उससे उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा. वो अगला वाला जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और ये खुद क्या होगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ऑक्सीजन. सो इट एक्ट्स एज कार्बन, सो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इफ वी ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल और इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन ने Fe2O3 के साथ रिएक्ट करा है. सो व्हाट विल हैपन कि इसने इस कंपाउंड को, यानी कि ये एक प्रॉपर कंपाउंड था, स्टेबल कंपाउंड था, लेकिन इसने क्या करा? इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया.
सॉरी खुद रिड्यूस हुआ है और इस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर दिया. इफ़ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, इसने क्या करा कि जब इसने इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा, सो इट विल फॉर्म कार्बन CO एंड ऑक्सीडाइजेस दिस कंपाउंड, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो ये ले गया एंड इट विल कंबाइन टू फॉर्म CO, और इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट. सेम एग्जांपल इफ यू अप्लाई ओवर हियर, CuO कॉपर ऑक्साइड इज द मेटल ऑक्साइड. व्हेन कार्बन गेट कंबाइंड टू रिएक्ट विद इट, so it reduces this and could and itself get oxidized. So this is the concept of the reducing agent and oxidizing agent. Most of the students get confused in this concept. Must not mix with the reducing agent with the reduction or oxidizing agent with the oxidation. Now moving towards the another chemical property of the carbon, which is reaction with oxidizing agent. कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है. ऑब्वियसली वो इटसेल्फ जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो रिएक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. मैं आपको पहले बताकर आ चुकी हूँ. यानी कि इन सच कंडीशन के कार्बन जिनसे रिएक्ट करेगा वो they will ultimately gain electron. When carbon react with the HNO3, which is nitric acid, it will combine to form carbon dioxide, NO2 and water. Same as when carbon combine to react with the sulfuric acid, it will ultimately form carbon dioxide, SO2 and water. In this case, carbon get oxidized because it get react with the oxidizing agent. As I have said that oxidizing agent से react कर रहा है, तो ये agent क्या करेंगे, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे और कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे, क्योंकि एजेंट हैं ऑक्सीडाइज करवाने के. तो कार्बन इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा. रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है. सो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ दीज कॉन्सेप्ट. मस्ट नॉट get confused in these two concepts. So these are the basic chemical properties of the carbon. Thank you.